motivation is a scam and motivational speakers are scam artists. There's this thing that I call a honeymoon phase, which basically जब तुम कोई नई चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो, when you try to build a new habit ना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन you are extremely motivated, effortless progress होएगी, बहुत ज़्यादा progress मिलेगी, you will be very consistent, you will show up every single day, right? But जैसे ही honeymoon phase ख़त्म हो जाता है 10 maximum 20 दिन के बाद, then you're back to where you started. You don't show up anymore. You will not be making any progress because you don't show up anymore. और consistency भी तुम्हारी बहुत ख़राब होगी. There's a big reason for that और इसके बारे में हम बात करेंगे. But this becomes a cycle. You see something new, you think कि ये चीज़ करनी चाहिए, and then you start doing it. You are in a honeymoon phase, and then you stop because you did not build a habit in the first place. Then you start doing something new or you pick up that old thing again. फिर से तुम्हें बहुत सारा motivation मिलता है. And then you stop again क्योंकि तुमने सही तरीके से उसको स्टार्ट नहीं किया in the first place. और ये साइकिल बन जाती है जिसमें तुम फंस जाते हो. And then you grab on to this identity कि मैं किसी चीज़ में consistent नहीं रह सकता, मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूँ तो ख़त्म नहीं कर सकता. If you're tired of being scammed by motivation, I think I can help you. लेकिन अगर तुम्हें बस एक motivational वीडियो देखनी है, then you can go on to click off and go watch some other motivational speaker. इस वीडियो में I will give you a once and for all solution. So if that sounds interesting, keep watching. एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसको बोलते हैं हैबिट ट्रैकर. मेरा हैबिट ट्रैकर यहाँ पे चिपका हुआ है, ये चीज़ वाइट पेपर, ये हैबिट ट्रैकर. हैबिट ट्रैकर इज़ बेसिकली लिस्ट के टॉप में हैबिट्स होती हैं जिसको तुम्हें मॉनिटर करना है, फॉलो करना है, और लिस्ट के लेफ्ट साइड में मार्जिन साइड में डेट्स लिखी होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ. एवरी सिंगल डे जब तुम एक हैबिट कर लेते हो, यू पुट अ टिक मार्क. अगर नहीं करी हैबिट, देन यू पुट अ क्रॉस. एज सिंपल एज दैट. ये होता है हैबिट ट्रैकर. दिस विल बी द वन थिंग that will keep you on track. उन 10-20 दिन के बाद जब तुम चीज़ करना छोड़ देते हो, this will be the one thing which will keep you from falling off the wagon after those 10-20 days जब तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. तो इस एक टूल की मदद से तुम अपनी टास्क्स ऑटोमेटिकली करोगे, बिना प्रोक्रास्टिनेशन के करोगे, और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिलेटिवली उतना रेजिस्टेंस नहीं देगा, एक्सक्यूजेस नहीं देगा. Here's how it works. Here's why it works. Reason number 1 कि ये क्यों काम करता है is because when you monitor something, when you track something, you will automatically see more progress towards it. It is scientifically proven. तुम्हें कुछ extra efforts करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ज़्यादा consistent हो. अगर तुम simply सिर्फ एक चीज़ को monitor करोगे, you will make more progress. अगर तुम simply अपना weight monitor करना start कर दोगे और तुम्हारा goal है कि weight loss करना है तुम्हें, automatically तुम्हारा weight नीचे जाता हुआ तुम्हें देखेगा. It's just how it works. That's number 1 reason why this works. Second is when you put a tick mark on the habit tracker. जब भी तुम कोई हैबिट करते हो and then you put a tick mark, you are basically doing positive reinforcement. मतलब तुम उस हैबिट के साथ पॉजिटिव चीज़ें एसोशिएट कर रहे हो because you feel good whenever you put a tick mark. क्योंकि तुमने बोला था मैं कुछ करूँगा and then you did it. You feel proud, right? तो तुम पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ एसोशिएट करते हो and that is the key ingredient of building a habit. That's the second reason why it works. Reason number 3 why it works is whenever you put a cross mark on there, you are basically doing negative reinforcement. Negative reinforcement is the key ingredient of breaking habits. Negative reinforcement is basically तुम negative चीज़ें एसोशिएट करते हो because whenever you put a tick mark on there, you will feel shameful क्योंकि तुमने कहा था मैं कुछ करूँगा and then you didn't do it. This will make your brain hate putting a cross on there and then automatically you will, or not automatically, but this is why you will have more tick marks on the habit tracker and relatively you have less crosses on there. These are the 3 reasons why the habit tracker works, why it has been working for me, why it has been working for my students, my clients, everybody. There may be an excuse in your mind और कुछ होगा तुम्हारे दिमाग में जिसकी वजह से तुम ये habit tracker नहीं रखोगे. I know that. So there is going to be a link for a completely free habit tracker in the description below. I think I'll leave the first link in the description is going to be the link for a habit tracker. I have made it for myself especially for you. इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, 4-5 प्रिंट आउट निकलवा लेना and then start using it at least for a month. Put it somewhere where you can see it every single day. तुम्हारे चेहरे पे होना चाहिए. Don't put it on a bathroom. गीला हो सकता है and you just don't see it as often. Put it on a dressing room mirror या फिर अपने बेडरूम के बेड के ऊपर लगा दो कहीं पे where you can see it every single day ताकि it's inescapable. That is how you eliminate the need for motivation. Sorry for the clickbait, I guess. I'm building a community of high value men और मैंने want to become high value. अगर तुम्हें लगता है तुम उनमें से एक को subscribe to my channel right now ताकि मेरे videos आपको और आसानी से ढूंढ पाए and I can help you in your own self-improvement journey by videos just like this every Monday and Thursday. Share my video to 5 people who you think this will benefit the most and I will see you in the next video.